हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडविन केमसाइंस। तो स्टार्ट करिबा कोऑर्डिनेशन ऑफ फास्ट लेक्चर। ये बहुत ही गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक। चाहे बे एमएस एंट्रेंस एग्जाम दियंती, जेई नीट दियंती, पोस्ट एमएस एंट्रेंस, सीएसआर नेट गेट कि लेक्चरशिप एग्जाम वगैरह दियंती, प्रत्येक एग्जाम रे ये एमती गोटे टॉपिक जो टॉपिक रो बहुत सारा क्वेश्चन आसे, बहुत सारा ही क्वेश्चन आसे। आउ इन मोर गोटे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो पिला क्वेश्चन सॉल्व करते असाइनमेंट रे कि एग्जाम रो क्वेश्चन रिगार्डिंग द मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। तो सेठी गोटे जनरल अप्रोच हुए कि सपोज आम केमिकल बॉन्डिंग रे क्वेश्चन सॉल्व करते, ऑल्सो इनऑर्गेनिक रे कोऑर्डिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करते। इनऑर्गेनिक टॉपिक आसवा कि गोटे जनरल दिमाग को ख्याल आसी जाए कि एलोंग ए पीरियड और डाउन ए ग्रुप एमती बहुत कॉन्सेप्ट आसुथबो। आउ यार चक्कर में बहुत क्वेश्चन मिस्टेक है। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହେ କି ଭାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆମେ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ରେ 1-to-1 ରିଲେସନ୍ରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର କି ଭାଇ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି କନସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଏତେ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ରେ ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେବନି। ଆକୁ କହିବାର ମତଲବ କି ମୁଁ ବତେଇବି ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଆଇଡ଼ିଆ ଦେବି ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ compounds of main group element and compounds of a transition metal complex or these are the coordination complexes. Okay, बहुत ही गुड़ा डिफरेंस अच्छी दुईटा कंपाउंड भितर। तो जदि एते गुड़ा डिफरेंस थिबो देन आमे काहे कि कांसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आमे मेन ग्रुप एलिमेंट दैट मींस जेतला आमे केमिकल बॉन्डिंग रो क्वेश्चन सॉल्व करतन अप्लाई करबा नै तो केमिकल बॉन्डिंग रे जहाँ भी कांसेप्ट अछि आमे काहे कि बा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे अप्लाई करबा। काहे कि ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे भी अच्छी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सेठी भी मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ुचंते, सेठी भी डिस्टॉर्शन इन ए कंपाउंड दैट मींस VSEPR थ्योरी पढ़ुचंते। द सेम थिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी अच्छी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आम अलग लैंग्वेज रे पढ़ुचंते, लिगैंड फील्ड थ्योरी, बट सही कॉन्सेप्ट देन आमर सेठी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से मैग्नेटिज्म पढ़ुचंते। देन डिस्टॉर्शन इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दैट मींस जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ुचंते। तो बहुत सेम टाइप ऑफ थिंग्स अच्छे बट कॉन्सेप्ट टोटल ही अलग। तो बतेबा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कंपाउंड्स इन मेन ग्रुप एलिमेंट एंड कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दैट मींस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। Basic differences is, suppose here coordination complex and here main group element, compounds of main group element or main group element compound. First number point, participating species. Participating species. In main group element, the compounds are ionic compound or covalent compounds. If ionic compound, the participating species are electropositive metal, that means these are the alkali or alkaline earth metals, and anions or radicals, they like जमते कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड वगैरह anions हो गए कि रेडिकल कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट वगैरह हो गए। इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेटिंग स्पेसीज के ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ट्रांजिशन मेटल्स एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंटिटी दैट में भी ये anions हो पारे जमते कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड ये सब हो पारे। नहीं तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल जमते कि NH3 वाटर अल्कोहल वगैरह हो गला, इथर वगैरह हो गला। नहीं तो रेडिकल्स लाइक कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट वगैरह हो गला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग स्पेसीज देख नबा। पार्टिसिपेटिंग स्पेसीज इफ आयोनिक बॉन्ड, इफ आयोनिक कंपाउंड then IA alkali or alkaline earth metals, IA कि डबल IA metal cation and anions like Cl minus, Br minus or like oxide, नहीं तो radical like carbonate, sulfate, phosphate like this or hydroxide like this. And if the compound is a covalent compound, if the compound is a covalent compound, if it is a covalent compound, if covalent compound, then participating species both are non-metals.
Like if it is methane CH4, participating species carbon and hydrogen both are non-metals. If SF6, sulfur and fluorine both are non-metal. Water, hydrogen and oxygen both are non-metals. So if covalent compound, both participating species are non-metals. Like CH4 हेगला, SF6, etc. etc. Common difference or common idea. And here coordination complex case रे participating species a more electropositive species as a transition metal, TM transition metal, and electronegative species like आना नहीं पारे जेमती के फ्लोरिडो ब्रोमिडो आयोडिडो वगैरह किंबा ऑक्सीडो वगैरह किंबा रेडिकल्स ही पारे जेमती के हाइड्रोक्स हो गला कार्बोनाटो हो गला सल्फाटो हो गला किंबा फॉस्फाटो वगैरह हो गला किंबा न्यूट्रल मॉलिक्यूल neutral molecules like suppose NH3 ହେଇଗଲା କିମ୍ବା aqua H2 ହେଇଗଲା କିମ୍ବା alcohol ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ether ହେଇଗଲା like this ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି କୌଣସି positive charge species also ligand ଯେମିତି କି nitrosonium ion ହେଇଗଲା NO+ like this तो participating species ଏଠି ଯଦି ionic bond alkali किंबा alkaline earth metals ର କୌଣସି cation किंबा anions radical वगैरह ହେଇଗଲା covalent compound ହେଲେ both participating species non metal ହେଇଗଲା but ए केस रे electropositive transition metals and also side species की होची a more electronegative entity may be anions may be radical or may be neutral molecule हे पारे ये ला गोटे first difference point second difference point electron sharing को नहीं के second difference point is electron sharing. Second difference point is electron sharing. If it is ionic bond, the cation prefer to lose electrons to octet to satisfy the nearest inert gas configuration, and the side species accept those electrons. Suppose ମୁଁ କହିବି कि NaCl सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो and क्लोरीन गोटे इलेक्ट्रॉन को गेन करी दैट इज क्लोराइड रे कन्वर्ट हो जिवो से जहा भी तो सपोज हम कहबा कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम दुईटा इलेक्ट्रॉन लूज करले से पड़ से कार्बोनेट एंटिटी दुईटा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करथिवो तो हेस लॉ अकॉर्डिंग ए सब हम जो पढिचंते तो थिंक इज व्हाट जदी ये आयोनिक कंपाउंड होता है if ionic compound then 100% electron give and take जने जनकर इलेक्ट्रॉन को 100% दे देबो आउ जने 100% इलेक्ट्रॉन को नै जिवो सपोज मु कहबी कि NaCl कंपाउंड अछि NaCl सोडियम फर्स्ट ऑफ ऑल अछि 11 एटॉमिक नंबर and क्लोरीन अछि 17 एटॉमिक नंबर ये गोटे इलेक्ट्रॉन लॉस करि सल्ला परे ये पहुंच जाउची Na+10 इलेक्ट्रॉन ने ये सेम इलेक्ट्रॉन को गेन कला परे पहुंच जाउची Cl-18 इलेक्ट्रॉन ने तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करिवो सोडियम आयन ने कन्वर्ट होबो दैट गोटे इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन गेन करके क्लोराइड रे कन्वर्ट हो 100% इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक बट इफ इट इज ए कोवैलेंट कंपाउंड जदी ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है CH4 लाइक एटी कोन हुए बोथ पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज शेयर 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट मींस गोटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माने शेयर करनते जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से माने फॉर्म करनते तो कार्बन न गोटे इलेक्ट्रॉन आसीबो देन हाइड्रोजन न गोटे इलेक्ट्रॉन आसीबो आउ कॉमन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर बोथ पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज रो 50% रो कोन रहबो ना क्लेम रहबो लाइक सपोज मु कोन बतेल ना जदी कोवैलेंट कंपाउंड हेता देन each participating species share one electron density and both satisfy the nearest inert gas configuration.
ये सपोज हाइड्रोजन देन दिस इज कार्बन ये है कार्बन एंड हाइड्रोजन एठी 100% इलेक्ट्रॉन के का दे दबने कि 100% इलेक्ट्रॉन नहीं जीवनी माने कोवैलेंट कंपाउंड रे बोथ पार्टिसिपेटिंग स्पेसीज शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एट द कॉमन जोन दे क्लेम द शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोथ ठीक है बट इन केस ऑफ व्हाट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रे कौन हुए ना ट्रांजिशन मेटल तार वैकेंट ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराए कोठी इंटरेक्शन ने एंड द लिगेंड इंटरेक्शन ने इन्वॉल्व करे करता फील्ड ऑर्बिटल को हालांकि मेटल और लिगेंड भितर तीन टाइप रो इंटरेक्शन अच्छी गोटे सिग्मा इंटरेक्शन जो लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करे दैट इज इक्विवेलेंट टू 2 केवल सिग्मा बॉन्ड करे पुणी किसी लिगेंड अच्छे प्रथम तो सिग्मा बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे मेटल को पुणी तांको पाखरे एते किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थाए पुणी अगेन से मेटल को पाई बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे दैट मीन्स से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करते मोर देन 2 सिग्मा बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे पुणी पाई बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे पुणी किसी लिगेंड अच्छे सिग्मा डोनेटिंग पाई एक्सेप्टिंग दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड थ्रू मेटल को तो किसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे पुणी रिटर्न ने मेटल पाखरु बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुणी पुल करी आनिबे हालांकि आम सब को आम लिगेंड फील्ड थ्योरी पढ़ा खैर ये आम बतई पारे कि प्रथमे सब मेटल तार वैकेंट ऑर्बिटल को इंटरेक्शन इन्वॉल्व करिवो का संगे लिगेंड संगे लिगेंड तार फील्ड ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करिवो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग रे का संगे ना मेटल संगे सो थिंग इज व्हाट एठी इंटरेक्शन बिटवीन vacant orbitals of metal and filled orbitals of ligand and this interaction are three types ये तीनटा टाइप रो इंटरेक्शन केमती ना दिस इज वन इज मेटल संगरे लिगेंड रचे सिग्मा इंटरेक्शन इन ए सिग्मा बॉन्ड दे डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्विवेलेंट टू 2 आउ किछि इंटरेक्शन अछि मेटल संगरे लिगेंड रो सिग्मा रे डोनेटिंग अगेन पाई रे भी डोनेटिंग देखो मु दुईटा आरो मार्क रो लेंथ को डिफरेंट कर दैट मींस सिग्मा बॉन्ड रे बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते अगेन मेटल लिगेंड पर आउर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थाए पुन से सेकंड बॉन्ड इंटरेक्शन दैट मींस पाई बॉन्ड इंटरेक्शन भी किछि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करते ओके दुईटा इंटरेक्शन हो जाए अगेन आउ किछि लिगेंड थांती मेटल को लिगेंड मेटल को सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे बट मेटल उपरे एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हिसला परे जदि लिगेंड पाखरे सिग्मा स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किंबा पाई स्टार एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थाए एंड एनर्जी लेवल मेटल फील्ड ऑर्बिटल संगे समान होता है आमे ताको लिगेंड फील्ड थ्रू पढ़िबा देन मेटल कोन करे ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुनी बैक डोनेट करे सॉरी ओके तो सिग्मा बॉन्ड थ्रू लिगेंड मेटल को बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी रिटर्न रे सॉरी लिगेंड मेटल को सिग्मा बॉन्ड थ्रू कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी रिटर्न ने पाई बॉन्ड थ्रू बेसी इलेक्ट्रॉन नहीं जाए सस टाइप ऑफ लिगेंड ए सब लिगेंड के थन जेमते कि PR3 हे गला CN- हे गला CO वगैरह हे गला ए टाइप रे लिगेंड सिग्मा डोनेटिंग पाई डोनेटिंग लिगेंड सब के थन जेमते कि F-, Cl-, Br-, OH-, NH2- like this mainly sigma donating ligand like NH3 like H2O like this ligand आपको हमें ligand field थ्रू पड़ेगा दैट मीन्स कौन तो बहुत बड़ा डिफरेंस कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग रे तो बहुत गड़बड़ अच्छी जदि आयोनिक बॉन्ड अच्छे 100% इलेक्ट्रॉन दवा नवा जदि कोवैलेंट बॉन्ड अच्छे 50% रो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रो शेयरिंग बट एठी कोन होची जणे तो वन साइडेड इलेक्ट्रॉन डोनेट करि चलची नहीं थोड़े इलेक्ट्रॉन देला आउ किछि लिगेंड अछन सिग्मा बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन दोचन पाई बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन दोचनते आउ किछि लिगेंड अछन सिग्मा बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन देई के पुनी पाई बॉन्ड रे इलेक्ट्रॉन नै जाउचनते तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत डिफरेंस अछि ओके नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग लाइन द मोस्ट important differentiation between coordination compound and main group element compound, that is our geometry and shape. 3 number point, this is geometry and shape, बहुत important, geometry and shape. Geometry and shape. ए पॉइंट रे कोन अछि ना
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो फॉर्मेशन हुए आपको हमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी पढ़िबा कि ट्रांजिशन मेटल मेनली तर वैकेंट ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराए हाइब्रिडाइजेशन में सो दैट कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो ज्योमेट्री 100% ट्रू ज्योमेट्री है कैसे सेठी किछि भी डिस्टॉर्शन आसेनी बॉन्ड एंगल रे बट जो मेन ग्रुप एलिमेंट में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ुछन सेठी तीनटा कैटेगरी हाइब्रिडाइजेशन है जाए लाइक जेमति के BF3 मॉलिक्यूल हे गला सेठी वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर हाइब्रिडाइजेशन रे सपोज CH4 हे गला ओनली orbitals containing one electron participate in hybridization but जदि NH3 type molecule हो गला सेठी lone pair along with orbitals containing one electron participate in hybridization तो कहबार सेंस कोन होबो कि मेन ग्रुप एलिमेंट जतलो हाइब्रिडाइजेशन पार्टिसिपेट करंती लोन पेयर पार्टिसिपेट करि पारे वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करि पारे नहीं तो कोनसी गोटे ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन अछि से हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करचंती तो जेतोले लोन पेयर पार्टिसिपेट करे हाइब्रिडाइजेशन ने तो डिजायर्ड बॉन्ड एंगल जितकी होबा दरकार हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग से पुनी डिस्टॉर्ट हो जाए जेमति के CH4 मॉलिक्यूल ले 0 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर तो 100% ट्रू ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल से भी टेट्राहेड्रल बट NH3 मॉलिक्यूल 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर तो ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल हुए बट शेप कोन है पिरामिडल दैट मींस डिस्टॉर्ट हो गला ज्योमेट्रीटा नहीं सपोज H2 मॉलिक्यूल 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर जो एबे भी तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल अछि बट शेप कोन है गला V शेप ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो कहबार सेंस कोन होबो जे लोन पेयर पार्टिसिपेट करबा हाइब्रिडाइजेशन रे ज्योमेट्री डिस्टॉर्ट हे जो शेप को बट जेहेतु लोन पेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स सेति पे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री 100% ट्रू ज्योमेट्री सेति भी किछि भी प्रकार डिस्टॉर्शन नाही डिस्टॉर्शन इन सेंस ऑफ व्हाट बॉन्ड एंगल ले किछि डिस्टॉर्शन आसीबो तो ज्योमेट्री एंड शेप हियर vacant orbital example name is suppose mu BF3 molecule le vacant orbital of boron participate kora hybridization ne here vacant orbitals or lone pair जेमति कि NH3 molecule हे गला जो थी कि लोन पेयर पार्टिसिपेट करछि हाइब्रिडाइजेशन ने H2 लोन पेयर पार्टिसिपेट करछि हाइब्रिडाइजेशन ने और ऑर्बिटल्स containing one electron participate in hybridization आर एग्जांपल हमर पाकर CH4 अछि ना CH4 रे कोन हुए एस ऑर्बिटल ले गोटे इलेक्ट्रॉन CH4 मॉलिक्यूल ले 2s ऑर्बिटल ले गोटे इलेक्ट्रॉन आणि 2p ऑर्बिटल ले अछन तीनटा इलेक्ट्रॉन ये सब गुडा को पार्टिसिपेट करते हाइब्रिडाइजेशन ने ये हो जाए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक नहीं देन ये गोटे गोटे हाइड्रोजन आसे 1 हाइड्रोजन 2 3 4 हाइड्रोजन माने प्रत्येक हाइड्रोजन गोटे लेखाए इलेक्ट्रॉन शेयर करते देन ये पुनी बॉन्ड बनी जाए CH4 मॉलिक्यूल यही हुए NH3 मॉलिक्यूल ले गोटे लोन पेयर हुए NH3 मॉलिक्यूल ले ये मॉलिक्यूल ले केमिति हुए एस ऑर्बिटल ले दुईटा इलेक्ट्रॉन हुए देन p ऑर्बिटल ले 1 इलेक्ट्रॉन ईच एमाने सब मिस जानती ये हो जाए sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक नहीं BF3 मॉलिक्यूल ले कोन हुए ना BF3 मॉलिक्यूल ले हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरॉन 5pa ये फर्स्ट S2 2s1 ने गोटे इलेक्ट्रॉन देन ये 2px1 2py1 2pz फांका ये सब मिशन ते कोठी हाइब्रिडाइजेशन ने एक नहीं एटी वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करि जा हाइब्रिडाइजेशन तो थिंग इज व्हाट इन केस ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट जदि से माने कोन से कंपाउंड सेटी जो हाइब्रिडाइजेशन हुए वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करि पारे लोन पेयर पार्टिसिपेट करि पारे किबा गोटे ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करि पारे द थिंग इज व्हाट जेतो बळे लोन पेयर पार्टिसिपेट करि हाइब्रिडाइजेशन ने ज्योमेट्री विल बी डिस्टॉर्टेड सेति पई कोन हुए ना सपोज वी हैव CH4 मॉलिक्यूल ये होची 0 और 4 बॉन्ड पेयर दिस इज 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं तो एठी मु जदी लिखे ज्योमेट्री एंड शेप ज्योमेट्री होची टेट्राहेड्रल शेप भी टेट्राहेड्रल ओके geometry and shape suppose we have the NH3 molecule this is 3 bond pair
plus one lone pair. Again this is sp3 hybridization. Geometry is tetrahedral but shape is what? Pyramidal shape. Pyramidal shape. एठी bond angle केते अछि? CH4 पाखरे bond angle अछि 109.28. एठी bond angle केते अछि? NH3 पाखरे ना 107. This is due to the lone pair participate hybridization. Suppose you have H2O molecule. E होछि 2 bond pair plus 2 lone pair and sp3 hybridization. Again geometry is tetrahedral but shape is what? V shape. And water रे bond angle केते हो जाए ना 104.5 degree. यार मतलब कौन जदि लोन पेयर पार्टिसिपेट कुछ हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्शन आसी जाउची. But the most differentiation or the most different concept here, what? In case of coordination complex, in coordination complex, only vacant orbital of metal participate in hybridization. Only vacant orbital of metal participate in hybridization. No lone pair as a part of hybridization. केबे भी लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेनी. सो इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स द ज्योमेट्री आर ऑलवेज ट्रू ज्योमेट्री. देयर इज नो डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल. हमें केबे भी पढ़ी नांती कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हे गला, स्क्वायर प्लैनेट बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हे गला किमा ऑक्टाहेड्रल रो बॉन्ड एंगल डिस्टॉर्ट हे गला. एबे केमिते बे सुनत. सो इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री no distortion in bond angle and are always 100% true geometry in sense of bond angle. Bond angle sense रे एमान सबले true geometry. बट बहुत पिला कहते कि सर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स तो डिस्टॉर्शन अछि. एस से डिस्टॉर्शन होचे बॉन्ड लेंथ रे. जेतला हम जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढंती, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन थ्योरी रे हमें पढंती कि टेट्रागोनली इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्रागोनली कंप्रेस्ड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. तो सेठी जो डिस्टॉर्शन थला कोट ना बॉन्ड लेंथ रे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन. बॉन्ड एंगल तो कांस्टेंट रहबो 90 डिग्री हला टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे बॉन्ड एंगल 109.20 फिक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रे. नहीं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से सीज एंगल 90 डिग्री, ट्रांस एंगल 180 डिग्री फिक्स. से चेंज होबने, बॉन्ड लेंथ चेंज हे पारे. तो यदि हमें डिस्टॉर्शन कांसेप्ट को कंसीडरेशन को नबा, यदि हमें डिस्टॉर्शन कांसेप्ट को कंसीडरेशन को नबा, फोर्थ पॉइंट रे डिस्टॉर्शन इट कौन हियर डिस्टॉर्शन इन बॉन्ड एंगल नहीं studied in VSE PR theory, valence shell electron pair theory रे हमें बॉन्ड एंगल ला डिस्टॉर्शन पढ़ंती. जेमति के हम संगे संगे बतैथिले. सपोज वी हैव लाइक CH4 एटी बॉन्ड एंगल केते अछि ना 109.28. ये होची 4 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर रा sp3 हाइब्रिडाइजेशन. If it is NH3, the same example again mu neithili, ye hochi 107 degree. This is 3 bond pair and 1 lone pair, and this is also sp3. If it is H2O, this is 104.5 degree. This is 2 bond pair plus 2 lone pair, again sp3. तो same hybridization bond angle change हे का जाउची. एक नहीं, but एठी जो distortion here, here the distortion is in bond. Here the distortion, if any,
here the distortion if any will be along bond length only. Studied by John Taylor theorem. नहीं जॉन टेलर थ्योरम तो लंबा थ्योरम अछि को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लागिवो नहीं पुणी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लागिले केमिति डिस्टॉर्शन आसीबो ताको हमें केमिति कंपैरिजन करबे ओटा थ्योरी अछि ओके जेमति सपोज मु एग्जांपल नै जिबे लेट मु नै जाउ सपोज निकेल S2O6 लाइक दिस ये जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इट इज सब बॉन्ड लेंथ सेम रो काई ना इट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आसेनी बट जदि मुझे कपर पाखरे S2O6 ये टेट्रागोनली इलोंगेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाए तो एक केस रे कोन होय ना कपर केस रे दुईटा बॉन्ड लेंथ जेड एक्सिस एलोंग लंबा हो जाए और चारिटा बॉन्ड एक्स एंड वाई एक्सिस एलोंग शॉर्ट हो जाए बॉन्ड एंगल एबे भी कांस्टेंट एबे भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री एबे भी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री बॉन्ड एंगल किते फरक आसीबनी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जिवो सो एठी डिस्टॉर्शन अलगा प्रकार दिनसो एठी डिस्टॉर्शन अलगा प्रकार दिनसो ओके नेक्स्ट को जिबा एम्यूट रे कोन डिफरेंस अछि एम्यूट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अप्रोच रे तो मेन ग्रुप एलिमेंट रे जतला में एम्यूटी करंती S2 रो किबा NH3 सेठी गोटे कांसेप्ट लागुए द बॉन्डिंग व्हिच इज मोर स्टेबल इट्स एंटी बॉन्डिंग विल बी द मोस्ट अनस्टेबल सपोज A एंड B भितर सपोज एनी AB मॉलिक्यूल अछि AB मॉलिक्यूल लेट इट किछि भी अछि सपोज AX BY एनी मॉलिक्यूल अछि आउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट रे Y एक्सिस रे कोन होना एनर्जी एंड Y एक्सिस से कौन हुए एनर्जी एंड X एक्सिस से कौन हुए इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगेन राइट साइड रे कोई एलिमेंट को रखा जाए जे बेसी स्टेबल थाए काहे ना पीरियोडिक टेबल ले जब हम एलोंग ए पीरियड मूव करंती एकदम राइट साइड रे के अछि तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट दिस आर द इनऑर्गेनिक एलिमेंट ओके तो राइट साइड रे सब रहबो के स्टेबल एलिमेंट लेफ्ट साइड रे के रहबो द एलिमेंट व्हिच इज comparatively less stable with respect to that element. Let A और B भितरे A अच्छे unstable and B अच्छे stable. Okay? तो energy ऊपर को increase करूँची तो जे तले रहिबो तार energy कम रहबो that means stable हबो again से भी right side रहछि तो एठी कोन होय ना the complex or sorry the bonding which is more stable its anti bonding is the most unstable एमिति rule follow होय but एठी molecular orbital treatment ता convert जाय कोना LFT रे ligand field theory रे LFT ligand field theory पुनी हमें तीनटा टाइप रे बनानते जदी मेटल और लिगैंड भितर ओनली सिग्मा इंटरेक्शन अछि ता पई एम्यूटी अलगा जदी मेटल और लिगैंड भितर सिग्मा बॉन्ड अछि एंड पाई बॉन्ड अछि सिग्मा रे डोनेशन एंड पाई रे डोनेशन ता पई अछि अलगा एम्यूटी जदी मेटल और लिगैंड भितर लिगैंड रो सिग्मा डोनेशन अछि अगेन पाई रिटर्न सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करे एंड पाई बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे ता पई एम्यूटी अलगा हो जाय खैर तीनटा अंक एम्यूटी रे ए रूल फॉलो होएनी जहार बॉन्डिंग जते स्टेबल सर एंटी बॉन्डिंग सेतिक अनस्टेबल हेई पारे कि न होई पारे किछि भी गारंटी नै फिलहाल मु कोन कहूछि ना एठी तीनटा एम्यूटी बने जदि मेटल और लिगैंड भितरे ओनली सिग्मा इंटरेक्शन अछि जदि मेटल और लिगैंड भितरे सिग्मा रे तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन अछि अगेन भी पाई रे इलेक्ट्रॉन डोनेशन अछि जदि मेटल और लिगैंड भितरे सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेशन अछि एंड पाई बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अछि ये तीनटा केस में तीनटा एम्यूटी बने आ प्रत्येक एम्यूटी रे केबे भी ए रूल फॉलो होएनी जार जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जते स्टेबल तार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेति अनस्टेबल होबो कि कोन तो एते ढेर सारे डिफरेंस पॉइंट अछि हमें केते डिफरेंस पॉइंट काढिलेनी ऑलमोस्ट पांचटा डिफरेंस पॉइंट काढिलेनी पांचटा डिफरेंस पॉइंट काढिलेनी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग from the very beginning प्रथमे ला हमर कोनटा participating species both case difference and most important the second point electron sharing भी दुई जणा को भीतर difference third point geometry and shape and fourth point is distortion and fifth point is what MUT तो जदि transition metal
ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एंड मेन ग्रुप एलिमेंट जो कंपाउंड ये दुईटा कंपाउंड कैटेगरी भितर एते गोटे डिफरेंस पॉइंट अछि देन हमें काहे कि बा जेतला हमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढुतवा काहे कि हमें मेन ग्रुप एलिमेंट कंपाउंड रो कांसेप्ट को अप्लाई करबा नाही तो जेतला हमें केमिकल बॉन्डिंग पढुचंती काहे कि बा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स रो कांसेप्ट को अप्लाई करबा काहे कि ना दुईटा को इनऑर्गेनिक रे आसंती इनऑर्गेनिक पढिबा कने गोटे जनरल अप्रोच आसे कि एलोंग ए पीरियड डाउन ए ग्रुप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से एमती से मिस्टेक है जाय क्वेश्चन तो खैर ताले ये तय हम कि भाई जिते दिन पर्यटन आम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ुवा केबे भी मेन ग्रुप एलिमेंट रो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रो कौन से भी कांसेप्ट को अप्लाई करबा नाही ओके ठीक अछि आगो को चलेबा गोटे ब्रीफ आइडिया नबा व्हाट इज ए मेटल व्हाट इज ए लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयोनाइजेशन स्फीयर डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह वगैरह नहीं तो थिंग इज व्हाट when two or more simple salt are chemical combined in a fixed mass of their in a fixed proportion of their weight then a molecular or addition compound is formed okay and depending upon the behavior of the salt in that means water they are categorized two types that means this is double salt and this is what double salt or what kon kohe taku lattice compound or we have the or seti kon acha amar na coordination compound डबल सॉल्ट रे कौन हुए ना सेल्ट जे सॉल्ट जो वाटर को पड़े जाए तार इट लूज द आइडेंटिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाटर को जाए इट डज नॉट लूज द आइडेंटिटी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ओके अगेन पुनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रो जो कॉम्प्लेक्स आयन स्टेबिलिटी हिसाब रे ये पुनी टू टाइप रे कन्वर्ट हो जाए दैट मींस कोनटा परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स ओके तो ये बहुत गोटे बेसिक आइडिया कोऑर्डिनेशन टॉपिक जो आम पढ़ते मोर कहबार सेंस कौन हम ये टॉपिक पूरा क्लीन करके आम जा एमती न लगो कि गोटे क्वेश्चन कोटी छुटी जीव कहीं आजिकल एग्जाम कौन होना बेसिक रू क्वेश्चन आसते हाईफाई लेवल को जाऊनी आ पिला पेपर देखिए आसला कौन कौन यार आम तो बहुत उच्चार प्रिपेयर करके जाइए क्वेश्चन तो पूरा बेसिक लेवल आसीगला तो कहबार सेंस कौन हम जदि कौन गोटे लंबा टॉपिक अच्छी इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी बेसिक रू ही भलसे जावा दरकार ओके तो what is question is what is a molecular or addition compound answer is when two or more simple salts are combined chemically when two or more simple salts are combined chemically in a fixed proportion of their weight then a addition or molecular compound is formed like suppose I give the example BF3 and suppose this is NF3 BF3 plus NF3 ये कंपाउंड केमिति हुए ना बोरॉन पाकर वैकेंट ऑर्बिटल अछि देन नाइट्रोजन ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अछि देन दिस डोनेट इलेक्ट्रॉन टू द वैकेंट ऑर्बिटल देन एमिति गोटे एडिशन कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाए बहुत भी एग्जांपल बुक रे अछि सपोज दिस इज एजीसीएन प्लस केसीएन एजीसीएन केसीएन सेम एजी पाकर वैकेंट ऑर्बिटल्स अछि देन एटी केसीएन सीएन इलेक्ट्रॉन डोनेट करे लाइक सपोज दिस इज Fe2SO4 plus K2SO4 plus 24H2O यही जाके मिलते ना K2SO4 dot Fe2SO4 dot 24H2O these are simple examples so depending upon their behavior in aqueous medium that means in water they are differentiated in two categories that is double salt
or double salt or what addition compound, or that is your what coordination compound. Depending upon their behavior in aqueous medium, ये दुईटा टाइप रे डिफरेंशिएट हो जिवे. गोटे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, and another is double salt. Double salt are those salt which lose their identity, lose the identity of their constituent in aqueous medium. ये कौन हुए? These lose the identity of constituents in aqueous medium. ये aqueous medium रे सेमानका आइडेंटिटी लॉस करिवे constituents. Like suppose मु कहूचे मो पाकर salt अछि KCl MgCl2 6H2O. तो कहबार सेंस सब जदि वाटर को जेबे सब भांगी के पळे जिवे, K अलगा हे जिवो, Cl अलगा हे जिवो, एठी Mg+2 अलगा हे जिवो, वाटर तो वाटर पळे जिवो, ए सब अलगा हे जिवे. बुझुछी ये all will be सब भार के अलगा अलगा हे जिवे. Suppose you have NH4 to SO4, NH4 to SO4, let this is FeSO4 dot 6H2 बेला कौन से डबल सॉल्ट अछि. आपको सपोज मु वाटर को नहीं गली, ये सब अलगा है जिवे. अमोनियम अलगा है गला, प्लस एटी सल्फेट अलगा, लेट एटी आयरन अलगा, वाटर तो वाटर मिसी पड़े गला. बट कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से कौन हुए? This complex do not lose the identity of all their constituents. Suppose we have an opposite, just लिखा जिमु. Suppose we have a salt, suppose you have coordination complex K4FeCN6, that means iron ଅଛି +2 state. जदि ako mu water को नहीं जाउची H2O को, that will be 4K plus FeCN6. FeCN6 plus 12, this is -4. This is तो आपको ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट रहला ये फर्दर आउट डिसोसिएट होबन. दैट मींस ये जो एठी तो CN8 अछि और आयरन भी अछि, एठी तो दुईटा कॉन्स्टिट्यूएंट अछंती, ये पार्ट ये तार आइडेंटिटी लॉस करिवोनी. दैट मींस ये टोटली आउ Fe और CN को डिसोसिएट होबनी. सो coordination compound are those salt which do not lose the identity of their constituents. Again, depending upon the stability of complex ion, coordination compound also categorizes two types. गोटे ला perfect complex और गोटे imperfect complex. एठी मु ड्रॉप डाउन करे दोछि. coordination compound दुईटा टाइप रे हिजिमो. depending upon stability of complex ion. ये दुईटा टाइप है. गोटे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, another is imperfect complex. परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड imperfect complex कौन से गोटे टॉपिक को प्रथम रे में क्लीन करके दउछन. परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कोन हो ना, हियर the complex ion is not further dissociated. Here the complex ion is not further dissociated. Like suppose हमें जो same example देइछंती K4FeCN6 वाला, आपको यदि मु वाटर को नहीं गली, ये 4K plus FeCN6 -4. Again आपको यदि मु again वाटर को नउची, ये फर्दर आउट डिसोसिएट होबन. दैट मींस Fe+2 plus 6Cn- रे एमिता ब्रेक होबनी. ठीक,
But if I took another example here, suppose we have an example, let K2 CdCN4, K2 CdCN4, K2 CdCN4, like this. If water is given, obviously that will be 2K plus CdCN4 minus 2. Again, if water again given, this is broken to Cd plus 2 plus 4Cn minus. तो all ये complex and further break है गला. तो ये क्या under है ना imperfect complex under है. तो coordination complex again two type रो depending upon the stability of complex and water. गोटे ला perfect complex और गोटे imperfect complex. तो ये गोटे basic idea. Then हमें गोटे basic idea नबा what is a central atom, what is a ligand, what is a coordination sphere and what is a ionization sphere. Let we are moving to the another portion. Let we have a salt coordination complex like Cu. Let this CuNH4 and let this is SF4, SF42 like this. like that. Arbitrarily किसी भी गोटे सॉल्व में चूज कर देले. सेंट्रल एटम कौन होबो? Central atom is always in a coordination complex. Central atom is always less in number. This is electropositive in nature and which use its vacant orbital in interaction with the side spaces. Side spaces get a ligand. Nine central atom con always coordination complex kotha koche. Always less in number, electropositive, and use its vacant orbitals in electron sharing. What is a ligand? Ligand is a electronegative species comparing to the central atom which share electron density with the metal. Share मतलब कौन? Give and take. जदि मु कहता give only give, जदि ligand only दो था, ligand only electron दिए नहीं. Ligand electron दिए भी, electron नहीं भी. तो ligand is a electronegative species. नहीं, which share electron density, with central atom. कहीं ना मुझे सांगे बताई तीनटा टाइप रो लिगैंड थांते. किछि लिगैंड ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते गोटे दफारे सिग्मा बॉन्ड रे. किछि लिगैंड सिग्मा बॉन्ड थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, पाई बॉन्ड थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते. किछि लिगैंड सिग्मा बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते, पाई बॉन्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते. तो शेयरिंग चली था. कोऑर्डिनेशन नंबर, CD number, coordination number of lone pair accepted by the central atom from the ligand is called the coordination number during the sigma bond only. Number of lone pair accepted by ligand, sorry, accepted by metal from ligand during sigma bond only, called the coordination number. Or mathematically, coordination number is equal to number of ligands into density. यार मतलब कि नेक्स्ट टॉपिक हमको लिगैंड थ्योरी भल से पढ़िबा कुछ. नेक्स्ट टॉपिक हमको लिगैंड थ्योरी भल से पढ़िबा कुछ. ओके, देन व्हाट इज ए कोऑर्डिनेशन स्फीयर? What is a coordination sphere? This is represented by a square bracket where we find the central metal and the ligands, and this is a non-ionizable part. Represented
by square bracket contains the central atom or central metal and ligand. ये कौन नॉन आयोनाइजेबल जेमती कि एमती जो मु कॉम्प्लेक्स गोटे आर्बिटरली चूज करिछि लेट दिस वन इठी एई जो पार्ट होते दिस इज योर व्हाट दिस पार्ट इज ये होचे कोऑर्डिनेशन ये होचे तमरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पार्ट जते के स्क्वायर ब्रैकेट भीतर रहला बाकी स्क्वायर ब्रैकेट तो बाहर जते के रहला दिस वन एटा होचे कोनटा ना आयोनाइजेशन स्फीयर गोटे मिनिट okay so this part is what square bracket भीतर जत्ते की क्वांटिटी रहला जो सेंट्रल एटम एंड लिगैंड दैट कांस्टिट्यूट द कोऑर्डिनेशन स्फीयर जे कि नॉन आयोनाइजेबल पार्ट आपको हम टिके बड़चडी को पढिबा कोटे वेडनेस कोऑर्डिनेशन थ्योरी के से माने ज्योमेट्री को डिफाइन करनते कि डिसोसिएट होबो कि डिसोसिएट होबोनी देन व्हाट इज आयोनाइजेशन स्फीयर what is ionization sphere the part outside the coordination sphere is called what ionization sphere the part outside coordination sphere CD sphere is called ionization sphere now ionization sphere ta kon this is ionizable that means से ब्रेक है जो ताकू ब्रेक करले CuNH3 4+2 प्लस ये सल्फेट -2 रे कन्वर्ट है जो नहीं so this is all about a basic class just a introduction to coordination कि coordination compound और main group element compound भीतर difference कोन अछि बहुत गुडे difference अछि तो पूरा शपथ नेला बोली coordination chemistry तला में पढी के जिबा कोन से भी concept main group element रा अप्लाई करिबानी चाहे से CPET थ्योरी तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी तो MUT तो फेजन्स रूल हेतो डाइपोल मोमेंट मेथड किछि concept हेतो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किछि भी अप्लाई करिबानी okay then the basic terminology central atom ligand your metal coordination sphere ionization sphere double salt molecular solid coordination compound complex ion sorry kon perfect complex imperfect complex तो these all we covered next class को हम start करबा कोनटा ना ligand theory एबे एग्जाम रे ligand theory बहुत क्वेश्चन आछे sigma donating ligand pi donating ligand sigma donating and pi accepting ligands pi ligand pi acid ligand वगैरह जितने भी अच्छे द नेम्स ऑफ लिगैंड बहुत जमते कि एम्बिडेंटल लिगैंड फ्लेक्सिडेंटल लिगैंड ओके तो बहुत एरिया दैट मीन लिगैंड एरिया भी बहुत किछि जिनस हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे पढिबे भी कोन मेटल और लिगैंड रो इंटरेक्शन तो बाकायदा भलसे लिगैंड थ्योरी को कवर करिबा कोछि तो हमें एक्सपेक्ट करबे कि क्वेश्चन थैंक यू एवरीवन